Hello everyone. Now this is going to be the most important video for people who are preparing for the CAT exam 2020 because the CAT registration is going to start from 5th of August. In this video, we'll give you the complete step-by-step guide for the form filling process of the CAT 2020 examination. Now here, right from the list of documents that you should have, how to upload the given documents, which all courses and IIMs do you have to tick mark, everything we'll discuss. So it's going to be a very important video. So stay tuned till the end of this video. Okay. Also, if you have not subscribed to the given channel, make sure you subscribe so that you get the further notification very soon. Okay. Now here, basically, the first step is let's see the requirement which you should have. Okay. So all the aspirants should have a valid mobile number and the email ID. Why? Because on this only you will get the unique ID and the password. Why it is important? Because first you would have to register on the website, and then you would have to apply for the CAT 2020 examination. There are two things linked. Okay, so please keep the following scanned document study. I repeat, please keep the following scanned document study of the given document which has been listed here. So the first is class 10, 12 degree or diploma mark sheet, all of them. If in case you have work experience, please ensure you have it. All the applicable certificates, right from with respect to your caste category or PWD advantage, whatever it is, you have to make sure it's ready. Your passport size photograph and signatures are also going to be important. Both of them, the signature and the passport, both in the scanned copy I am saying, and the dimensions is also going to be important. We'll see the dimension which I'll tell you later. Okay, so my first step now is to register on the official website. So the first step is you go on the official website, and the first thing is you need to register. Do not log in. You need to have the login ID and the password. So for registration, you would have to paste your name as what you have in your 10th SSC mark sheet, date of birth, email ID, phone number, and you will get the OTP. Only if you put the OTP, you will get registered there. Okay. So there will be some captcha which will come up. Make sure you register very well. After registration, you will get a confirmation from the CAT official website that now you can apply. While login, now the second step is going to be the login. First you have registered. Now while login, you will have your individual user ID and the password which is being given to you. No doubt you can change your password too. If you log in, now the original process of the application for 2020 exam will actually begin. Okay. Now let's see. There are number of steps which are included in the application. First, you will have to fill in your personal details. Post that academic details. Academic details will have class 10, 12 graduation. If in case you have a master's degree, if in case you have a professional degree, everything will have to be mentioned. Work experience will require all the details which you need to have for all the companies you have worked for. Okay, couple of assumptions which I would love to clarify here is if you have done any articleship, if you have done any internship, if your job full-time experiences along with your graduation, nothing of this sort is going to be useful to you. So your professional experience is going to be counted only and only from the date after your graduation, and this should be a full-time job. Okay. Next, which all programs you want to apply, because IIMs also gives you a lot of programs. Then important part is the STD, and then the payment will come into picture. Okay. So let's begin. So the first step that you have to fill is the personal details. Now in the personal details, as you can see, your date of birth, your gender, nationality, everything will come into picture. So you need to enter your father or mother's name, then select your category. If not general, then you would have to select the other category which you belong, nationality. The communication address will be important, and the last part is going to be uploaded documents. Now uploaded documents, what all things do you need to upload? As said, you basically have to upload your passport size photograph, signature. If in case the caste category is there, then the certificate of the caste and the PWD certificate. If you are physically challenged, then possibly you can either opt for the scribe option, but for that you would have to get the certificate, and these certificates of the caste and the PWD you can take it from the IIM official CAT official website only. The given dimensions of the photograph should be 13 to 45 and 18 to 35. Please make sure आपके पास पहले से हो, बाद में ना हो. The format should be JPEG. Clear? The file size should not be 80 KB. ठीक है. So अगर आप अपने फोटोज को तुम फेसबुक से डाउनलोड करोगे तो पॉसिबली तुमको उसको रीसाइजिंग करनी पड़ेगी. ठीक है. एंड मेक श्योर जो आपके फोटोग्राफ्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपके फोटोग्राफ्स हैं ये 6 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए. तो 6 महीने से पुराना होगा तो नहीं चलेगा. मेक श्योर ये रिलेवेंट और रिसेंट है पिछले 6 महीने के अंदर. ओके.
Now comes to academic details. In the academic details, class 10th, 12th and bachelor's degree, if in case you have master's degree, that, and the professional degree, everything you have to mention. Now if you are simply graduate तो आप यहीं तक जाओगे, अगर आपने मास्टर्स किया हो तो यहाँ तक जाओगे. इफ इन केस अगर आपने CA ICWA किया हुआ है तो आप प्रोफेशनल स्टूडेंट के डिग्री की कैटेगरी में आते हो, और यहाँ पे आपको ये भी मार्कशीट देनी पड़ेगी. क्योंकि मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे जो भी, अगर आप 10th का अपलोड कर रहे हो, डेटा डाल रहे हो, तो 10th का आपने यहाँ पे ले लिया, 10th का बोर्ड कौन सा है, और उसके बाद आपके मिनिमम आपके जो मार्क्स आए हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स एंड द एग्रीगेट परसेंटेज, ये 3 चीजें आपको डालनी पड़ेगी हर एक के लिए. अभी कोई आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ फिलहाल के लिए बस आप एप्लीकेशन डाल दो. सिमिलरली फॉर क्लास 12th एंड देन ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन 2 कैटेगरी, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करो, अगर आप क्लियर हो चुका है आपका ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे क्लिक करो. ठीक है, डेटा पॉइंटर्स अपने आप चेंज हो जाएंगे, तो जो आपको पूछा है वो आपको पूरी चीजें वहां पे डालनी पड़ेगी. ओके, अगर आपके पास सेकंड बैचलर्स डिग्री है तो वो भी आपको डालना पड़ेगा, मास्टर्स डिग्री है तो वो भी आपको डालनी पड़ेगी. सो डोंट गेट बायस कि मास्टर्स डालूं या नहीं डालूं. देयर इज नथिंग व्हिच विल चैलेंज यू हियर. सो मास्टर्स अगर आपके पास है तो आप मास्टर्स डाल सकते हो, यहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. ओके, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल डिग्री. सो इफ इन केस you are a CA ICWA student, then possibly you also have to enter your the certification course mark sheet details. Okay, that's how you will be able to finish up your academic details. Now the second point is work experience. As said, अगर आपने आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स किए हुए तो ये सब काम में नहीं आएगा. फुल टाइम जॉब एक्सपीरियंस जो आपके ग्रेजुएशन के बाद चालू हुआ वो हमको देखना है. ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज तुम अपना एक्सपीरियंस 2021 तक नहीं दिखाओगे, तुम ये नहीं दिखा सकते कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ. सो यू नीड टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस टिल 31st of July 2020. दिस इज द इंपॉर्टेंट डेट. 31st जुलाई तक आपके पास कितना है वो आपको देखना. तो अगर आप 2020 ग्रेजुएट हो और अगर आपने अप्रैल में से काम करना चालू किया तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सिर्फ 4 मंथ्स ही आप डालेंगे. क्लियर? सो अलग अलग IIMs के अलग अलग क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी वहाँ पे दे विल चेक इनटू वेयर डू यू फिट एंड वेयर डू यू नॉट फिट. ओके, सो डिस्क्लेमर इज ऑलरेडी बीइंग गिवन टू यू. एंड अलग अलग कंपनीज में जहां जहां आपने काम किया हुआ है वहां पे सबके आपके जो रिलीविंग लेटर्स हैं, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वहां पे आपको डेट्स डालने पड़ेंगे कब से कब तक आपने काम किया हुआ है. ओके, नाउ द सेकंड पार्ट, अगर आपके डिटेल्स आ चुके हैं अब आता है प्रोग्राम. प्रोग्राम का मतलब है कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम में सिलेक्ट करना है. ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं. यहाँ पे आपको ये देखना है कि पहली बात तो IIMs के अंदर जो MBA प्रोग्राम है उसको हम बोलते हैं PGP, विच इज कॉल्ड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम. बट कहीं कहीं पे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज भी हैं. ओके, सो अगर आपको उन स्पेसिफिक कोर्सेज में अगर आपको अप्लाई करना है, जैसे अगर आपको एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है तो आप IIM अहमदाबाद और लखनऊ के, तो आप ABM कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करोगे. अगर आपको HR कोर्स के लिए भी अप्लाई करना है, PGP into HR, तो आप वहाँ पे देख लेना हर एक IIM के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो लिस्ट किए हुए हैं. सिर्फ PGP तो आप सबको करोगे, उसके अलावा कौन से कोर्सेस आपको करना है वो आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख सकते हैं. क्लियर? एंड मेक श्योर आप सारे, अभी तो आपको सिलेक्ट करने में कुछ नहीं आ रहा, आप सारे IIMs को सिलेक्ट करो, इंक्लूडिंग न्यू IIMs, द एस्टैब्लिश्ड IIM, एवरीथिंग. नाउ कम्स अ टेस्ट सिटी. टेस्ट सिटी मतलब आप कौन से शहर से एग्जाम देना चाहते हो. मेक श्योर पहला प्रेफरेंस आप अगर बॉम्बे से हो तो बॉम्बे से दोगे, और इसके बाद जैसे आपको बोला कि 4 सिटीज का आपको प्रेफरेंस देना है. सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू फिल अप द एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल सो यू गेट द डिजायर्ड सिटी वेरी सून. सो आप जल्दी पहले फॉर्म भरिए, उसके बाद अगर आप मुंबई से तो आप मुंबई दे सकते हो, फिर पूना दे सकते हो, फिर नासिक दे सकते हो, फिर अहमदाबाद या सूरत भी दे सकते हो जो आपके पास में आ रहा है. क्लियर? सेम वे अगर आप दिल्ली से हो तो NCR में आप कहीं पे भी जो आपको मिलती है सिटीज वहाँ पे आप दे सकते हो उसे. द लास्ट पार्ट नाउ यू कैन सी इज द एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट. आपका एप्लीकेशन हो चुका है. अगर आप जनरल कैटेगरी EWS और NC-OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस 2000, SC/ST PWD की जो एप्लीकेशन फी है वो है 1000. ये आपको भरना पड़ेगा ताकि आपका रजिस्ट्रेशन पूरा खत्म हो जाए एंड टू एंड. क्लियर? तो मेक श्योर कल से रजिस्ट्रेशन चालू होने वाला है तो आप जल्दी से जल्दी भरें ताकि आपका जो प्रेफर्ड टेस्ट सेंटर है वो आपको मिले. एंड वी आर नॉट फेसिंग एनी डिफिकल्टी. आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू. नाउ वी आर आल्सो लॉन्चिंग द क्रैश कोर्स एंड द एडवांस वर्कशॉप बैचेस just not for CAT but also for the CAT and MAT, SNAP, ZAT, IIT and CET examination. So all the MBAP mentors who are from IIMs and the given desired business school will give you right proper strategy for their via the live session, the study material, the test series, and yes, no doubt the VAT and the GDPI camp will also be given to you. So the schedule is already out. We are beginning with our workshops now.
just not for CAT but also for NMAT, SNAP and other examination too. So if in case you are looking forward to join the crash course and the advanced workshop of MBAP, please ensure you get in touch on the given numbers so that we can help you out with the process and the registration. And then specifically we have, if you want you to come only for NMAT workshop or SNAP workshop, we have that flexibility also which will be available. So in the description box you will find a lot of links. Either you can follow that or you can contact on the given number so that we can help you out with the registration. Alright then, on this note I wish you all the very best for the upcoming examination. Stay tuned and have a healthy preparation for CAT 2020. Thank you.